So in mosses, the sex organs are present in the leafy stage. Okay, तो leafy stage रे ही हमारा sex organ गुड़ा देखा जाए. Then antherozoids represents male gametophyte, photosynthetic sporophyte, female gametophyte, motile male gametes. Okay, so the correct option is option number 4. Those are motile male gametes. The next question, in pteridophytes, spores germinate to give rise to. In pteridophytes, spores germinate to give rise to prothallus. Clear? Then in Selaginella, the embryo develops into gametophyte, sporophyte, archegonium, antheridium. So right option is sporophyte. Then in pteridophytes, the megaspores germinate to form pollen grain, seed, embryo and female gametophyte. So right option is female gametophyte. Megaspores germinate to form female gametophyte and microspore germinate to form male gametophyte or pollen grain. The next question, the development of young embryos of pteridophytes within the female gametophytes is a precursor to seed habit. Clear? So development of young embryos of pteridophyte within the female gametophytes. तो female gametophyte रे जेते बेले हमरो young embryo टा develop करिछि in case of pteridophyte, that is precursor to seed habit. Then which of the following possesses vascular tissues but lacks seeds? We all know this is very easy question. Those are ferns. Okay, fern हमरो seed नहीं but have vascular tissues. Clear? Then main plant body is differentiated into true root, stem and leaves in pteridophytes. Okay, already biophyte और pteridophyte section ने हमें discuss करिछे जे in case of bryophytes there is no true root, stem and leaves because rhizoids are present there in case of your bryophytes. Okay, in case of bryophytes leaf like, stem like ए भली हमें पढ़ुथिले, but in case of pteridophytes true roots, stem and leaves are present. Okay, then green algae, that is a thallophyta. Blue green algae तो हमर होचे एटा आइला बैक्टीरिया, तेनु हमर आंसर होचे pteridophyte. Then the first terrestrial plants to possess vascular tissues are also pteridophytes. Okay, because bryophyte रे हमरो bryophyte या algae रे ए सब रे हमरो vascular tissues नथिला. So first terrestrial plant to possess vascular tissues are pteridophytes. Okay, भल से प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज ये भली क्वेश्चन ही आपनकर आसीबो हमर प्लस टू पिलांग पई हो या ओएसटीएट पिलांग पई हो, सिटी एंट्रांस, बीएड एंट्रांस या हमर पीजी एंट्रांस पई भी जो माने प्रिपेयर हो जंदी आल्सो दे कैन फॉलो दिस क्वेश्चंस. Then in pteridophytes fusion of gametes takes place in archegonium. Okay, then first seeded plants are gymnosperms. Okay, gymnosperms are the first seeded plants and these are also the naked seeded plants. Clear? Then next question related to angiosperm. So fusion of a male gamete with a secondary nucleus forms the all these questions are related to double fertilization and triple fusion. तो टिके मु तार मन पके दोची जस्ट एटी देखंतु. This is the diagrammatic representation of a
मैच्योर एम्ब्रियो सैक तो एम्ब्रियो सैक रे हमर कोन रहिला देयर आर 2 synergids 1 egg cell 2 polar nuclei and 3 antipodal cells क्लियर तो एतिक जिनस आमर रहिला बोल कि हम जानि जे पढि जे जस्ट क्वेश्चन दि चारटा क्वेश्चन से रिलेटेड आसछि बोले टिके मन पकै दउछे तो पोलार न्यूक्लियटा हमर कोन हबो ने फर्स्ट फ्यूज हे जिवो फ्यूज हे कि हमर सेकेंडरी न्यूक्लियस करिवे ओके तो हमर जते बेले पोलेन ट्यूब आसुची हमर दुईटा पोलेन ग्रेन आसीबो भितर को दुईटा आसला परे गोटे हमर फर्स्ट एग सेल सहित हबो एंड दैट इज जाइगोट करिवो तो गोटे फर्टिलाइजेशन हमर एठी हला देन आउ गोटे जो पोलेन ग्रेन आसीबो अगेन दैट विल फ्यूज विथ दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस ओके तो सेकेंडरी न्यूक्लियस टा केमती फॉर्मेशन हेतिला ना ड्यू टू फ्यूजन ऑफ पोलार न्यूक्ली दुईटा पोलार न्यूक्ली फ्यूजन हे कि हमर सेकेंडरी न्यूक्लियस हेतिले वर्तमान जते बेले आउ गोटे पोलेन ग्रेन या सह फ्यूज हेला ओके तो एटी हमर कोन हला एटी भी गोटे फर्टिलाइजेशन हला एटी गोटे फर्टिलाइजेशन हला सो टू हियर आर टू फर्टिलाइजेशंस ओके टू फर्टिलाइजेशन बट ट्रिपल फ्यूजन फ्यूजन के थर गोटे थर हला हमर पोलार न्यूक्ली रे हेतिला आ गोटे एटी एग रे हेतिला देन अगेन आउ थरे आउटे पोलेन ग्रेन सहित हमर ए सेकेंडरी न्यूक्लियस टा पुनी फ्यूज हला तो 3 टाइम्स फ्यूजन हला एंड 2 टाइम्स fertilization hela that's why it is called double fertilization and triple fusion clear and this is 3n okay तो एटा हमर 3n आ एठी जोटा आइतला सेटा हमर 2n okay तो क्वेश्चन डिस्कशन करिबा फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विदिन द सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म्स द एंडोस्पर्म एटा हमर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करे 3n जोटा हमर सेटा कोन एंडोस्पर्म Then in angiosperm the female gametophyte is also known as embryo sac clear then an event unique to angiosperm is double fertilization okay हमर सब angiosperm रे double fertilization टा हुए then dash functions as landing platform for the pollen grains in flowering plant okay तो flowering plant रे हमरो pollen grain टा कोठी land करे that is on stigma that's why stigma is called as the landing platform for the pollen grains then which of the following cells of embryo sac degenerate after fertilization of angiosperm तो angiosperm रे हमरो fertilization हेला परे synergids आउ एंटीपोडल सेल्स जोड़ा थिबे जोड़ा ऊपर कहितली एंटीपोडल सेल्स हमर कोड रहले एठी दो तीनटा सेल थिबे ओके एंड एठी जो दीटा सेल थिबे एक तळे जो दीटा थिबे से माने डीजेनरेट करि जिबे देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म ओके तो आमे फर्टिलाइजेशन पढ़िले हमर एंजियोस्पर्म रे कोन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन देखा जाए तो क्वेश्चन से कहूची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक तो एम्ब्रियो सैक रो हमर को सेल टा डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म रे हमर फर्टिलाइजेशन परे को सेल टा डीजेनरेट हे जाए so your right option is both synergids and antipodal cells clear the next question in angiosperm the megaspore develops into pollen grain stigma embryo sac and ovary so right option is megaspore develops into option number 2 that is embryo sac clear then the germination of pollen grain results in the formation of the germination of pollen grain ta amara kon result करे that is option number 3 pollen tube clear सब अच्छी आमर एटा एंजियोस्पर्म रो ट्रिपल
फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन जो सेशन टा अछि सेठी को गले हम ए सब टर्म ऊपर क्लियर हे परबा हेटा टिके देखि देबे then eucalyptus is different from cedrus in the presence of eucalyptus is different from cedrus in the presence of that is triple fusion okay तो eucalyptus रे हमरो triple fusion देखा जाए then cotyledons are modified option number 2 embryonic leaves okay हमर जते बेले मोनोकोट हो या डाइकोट हो जते बेले हमरो मुग गछरु गछटा बाहरुची suppose this is dicot plant so these are developed into leaves okay so cotyledons are embryonic leaves then which of the following is not a dicot which of the following is not a dicot that is option number 4 banana is a monocot बाकी जहाँ रहिले हमरो eucalyptus acacia and sunflower those are dicots okay